कितने आएंगे क्वेश्चन पता नहीं। Have you been to the museum yet? No, but I plan to go on Saturday. I think you'll really enjoy it. Where will the woman go on Saturday? In museum. Sorry, but I won't be able to come by your office today. That's okay. Any day this week is fine. How about Wednesday? Okay, I'll put it on my calendar. When did they agree to meet? On Wednesday. Did you finish the book? No, I have 2 chapters left. The last 2 are very short. How many chapters does the woman need to read to finish the book? 2 chapters. I received a postcard from my cousin. That's nice. Where did she send it from? It's from Paris. What did the man receive from Paris? A postcard. Do you have time to complete a survey? Sure, I'd be glad to help out. Thanks. I appreciate your participation. What was the woman asked to do? Participate in a survey. You just moved here, didn't you? No, I moved here 5 years ago. I wonder why I've never seen you before. When did the woman move to the town? 5 years ago. What should I bring to your house? Could you bring some tomatoes for the salad? Sure. How many do you need? What will the woman bring? You should try restarting the computer. I'll give that a try. Will it work? That's what I do whenever I have problems with mine. What is the woman's suggestion? How can we show customers how to use the product? A live demonstration might be helpful. What a brilliant idea. What does the woman suggest? Are you ready to finalize this plan? I'm waiting for the director's approval. Let me know when it's ready to go. Who needs to approve the plan? I didn't find this month's budget report in the file. The accounting department is still compiling it. Can you let me know when it's ready? What is the accounting department compiling? Who are you talking to on the phone? It was a journalist. He wanted to schedule an interview with the mayor. I bet he's curious about the mayor's new plans for the city. Who was the man talking to on the phone? हाँ तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो हमारे वर्सेंट एग्जाम में पूछे जाने वाला 3rd पार्ट होता है यानी कि कन्वर्सेशन वो पूरा सुन लिया होगा। उसके क्वेश्चन टोटल 12 आते हैं, वो आपने सारे क्वेश्चन सुन लिए होंगे और लेवल देख लिया होगा कि इजी, मीडियम और हार्ड तीनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि 4-4 का हिसाब रहता होगा। 4 इजी आएंगे, 4 मॉडरेट आएंगे, 4 हार्ड आएंगे। शुरू वाले तो मेरे को बहुत ही ईजी लग रहे थे, जैसा आपने देखा भी होगा। मैंने अपनी आवाज़ को कट कर दिया है, नहीं मैं इन सारे सवालों के जवाब दे रहा था, पर मैंने अपनी आवाज़ को जानबूझ के कट कर दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता और कल मेरा एग्ज़ाम होता और एक रैंडम बंदा उन सारे सवालों के जवाब मेरे को दे के बता रहा होता तो मैं पक्का उसे स्किप कर देता और शायद वीडियो को डिसलाइक भी करता। इसलिए मैंने जानबूझ के अपनी आवाज़ को कट कर दिया है, पर 1-2 क्वेश्चनों के लिए रखा भी है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मैं बोलता कैसे हूँ या फिर बोलना कैसे है। ठीक है, तो कन्वर्सेशन में मैं फिर से बता देता हूँ, 12 क्वेश्चन टोटल आएंगे और आपको 15 सेकंड मिलेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन मतलब कि जो उनकी कन्वर्सेशन है, उस कन्वर्सेशन को सुनने के बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसके बाद आपको 15 सेकंड मिलेंगे अपना जवाब सोचने के लिए और उसे बोल के बताने के लिए। तो ये वाला काम सही से कर लेना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अगर इन्हें नहीं कर पाओगे सही से तो आगे दिक्कत आ जाएगी। बाकी अगर वर्सेंट क्लियर करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो सैटरडे को वीडियो आने वाला है, सैटरडे या फिर संडे मतलब अपने 11 तारीख को एक वीडियो आने वाला है जिसमें मैं बताऊंगा वर्सेंट कैसे क्लियर कर सकते हैं, और वही सारे जैक जुगाड़ अपने जितने भी मैं इकट्ठे कर पाऊंगा सारे आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं फालतू की बकवास बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि ये वाली प्लेलिस्ट मेरे को थोड़ी सीरियस बनानी है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय। पैसे का क्या फायदा when you die lonely? Yeah, words from an OG.